today we will see what is silicon control rectifier, that is SCR. Okay, SCR is a three-terminal device which has anode, cathode and gate, which is shown in figure. मतलब आप जहाँ जैसे कि देख सकते हो SCR ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एनोड, कैथोड और गेट रहता है, जैसे एनोड, कैथोड एंड गेट. SCR has a built-in feature to turn on and off its switch in control. ठीक है, मतलब क्या उसमें हम टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं. जैसे कि उसमें आप देख सकते हो ये उसका सिंबल है और यहाँ पे आप PN जंक्शन देख सकते हो. ठीक है, ये SCR का है. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ SCR. SCR इज़ अ 4 लेयर एंड 3 टर्मिनल डिवाइस. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो SCR पे 4 लेयर से PN और 3 टर्मिनल से एनोड, कैथोड एंड गेट. जैसे कि आप देख सकते हो इस जंक्शन को हमने कैसे जंक्शन J1, J2 एंड J3 इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है. These junctions are either alloyed or diffused based on the type of construction. The outer layers, that is P and N layers, are heavily doped, whereas middle P and N layer are lightly doped. मतलब क्या कि जो ऊपर वाली P and N लेयर है वो heavily doped रहती है और जो मिडल में सेक्शन की जो है वो lightly doped रहती है. The gate terminal is taken at the middle P layer, anode is from outer P layer and cathode is from N layer. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एनोड, कैथोड और गेट. ठीक है. The SCR is made of silicon because compared to germanium, leakage current in silicon is very small. मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे ये दोनों हैं, हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी लीकेज करंट जो है वो बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो PN जंक्शन है, वहाँ पे एनोड, कैथोड और गेट है. सबसे पहले जो PN जंक्शन है उसे हमने एनोड कनेक्ट किया है, जो कैथोड है उसे हमने N को कनेक्ट किया है और जो बीच में P है उस जंक्शन को हमने गेट कनेक्ट किया है. टू मैन्युफैक्चर SCR 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड, नेमली प्लानर टाइप, मेसा टाइप एंड प्रेस पैक टाइप. For low power SCR, planar construction is used, whereas all the junctions in SCR are diffused. In meta type construction, junction J2 is formed by diffusion method and thereby the outer layers are alloyed to it. ठीक है. This construction is mainly used for high power silicon control rectifier. ठीक है, ये जो है हम high power silicon control rectifier में यूज़ करते हैं. To provide high mechanical strength, that SCR is braced with plate made up of either molybdenum or tungsten, and one of these plate is soldered to a copper stud which is further threaded to connect the heat sinks. Okay, working or modes of operation of SCR. SCR के 3 working modes है. ठीक है. Depending on the biasing given to the SCR, the operation of SCR is divided into 3 modes. These modes are forward blocking mode, forward conduction mode and reverse blocking mode. Okay, forward blocking mode. In this mode of operation, the silicon control rectifier is connected such that the anode terminal is made positive with respect to cathode while gate terminal is kept open. मतलब क्या कि इसमें जो एनोड है उसे हम पॉजिटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड और जो गेट टर्मिनल है उसे हम ओपन रखेंगे. इन दिस स्टेट जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन J2 इज रिवर्स्ड बायस. मतलब जैसे हम देखते हैं जंक्शन J1 और J3 जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस. ओके, और जंक्शन J2 जो है वो है रिवर्स्ड बायस. Due to this, a small leakage current flows through the SCR. Until the voltage applied across SCR is more than the breakover voltage of it, SCR offers a very high resistance to the current flow. मतलब क्या वो current flow को बहुत ज़्यादा resistance provide करेगा. ठीक है. Therefore, SCR acts as an open switch in this mode. इस मोड में मतलब क्या forward blocking मोड में SCR क्या करेगा, as a switch, ठीक है, एक्ट करेगा, एज अ ओपन स्विच एक्ट करेगा.
नेक्स्ट है forward conduction mode. In this mode, SCR or thyristor comes into conduction mode from blocking mode. It can be done in two ways, as either by applying positive pulse to the gate terminal or by increasing forward voltage. मतलब क्या, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम कब जाएंगे, जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बाद हम कंडक्शन मोड में जाएंगे. इसे करने के लिए दो टाइप्स हैं. हम एक तो गेट टर्मिनल को पॉजिटिव कर सकते हैं या फिर जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसे इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड बियॉन्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ SCR. Once any of this method is applied, the avalanche breakdown occurs at junction J2. मतलब क्या, इसके बाद avalanche breakdown होता है junction J2 पे. Therefore, SCR turns into conduction mode and acts as a closed switch, thereby current starts flowing through it. Note that in PI characteristics figure, if the gate current value is high, the minimum will be time to come in conduction mode as Ig3 is greater than Ig2 and is greater than Ig1. Okay. In this mode, the maximum current flows through SCR and its value depends on the load resistance or impedance. It is also noted that if the gate current is increasing, the voltage required to turn on the SCR is less if the gate biasing is preferred. The current at which the SCR turns into conduction mode from blocking mode is called latching current, that is IL. Also, when forward current reaches to a level at which SCR returns to blocking state is called holding current IH. At this holding level, depletion region starts to develop around junction J2. Hence, the holding current is slightly less than the latching current. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉरवर्ड करंट है, रिवर्स लीकेज करंट है, एनोड करंट है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है. ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन, cathode is made positive with respect to anode. Then the junction J1 and J3 are reverse bias and J2 is forward bias. मतलब क्या, कैथोड को हम पॉजिटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनोड. पहले हमने क्या किया था, एनोड को पॉजिटिव किया था विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैथोड को पॉजिटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनोड. देन जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स्ड बायस एंड J2 इज फॉरवर्ड बायस. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जंक्शन J1 और J3 जो है वो रिवर्स्ड बायस हो जाएगा और जंक्शन J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. दिस रिवर्स वोल्टेज drives the SCR into reverse blocking region, results to flow small leakage current through it and acts as an open switch. Okay, मतलब यहाँ पे वो as an open switch act करेगा. So the device offers a high impedance in this mode until the voltage applied is less than the reverse breakdown voltage VBR of the SCR. ठीक है, if the reverse applied voltage is increased beyond the VBR, then the avalanche breakdown occurs at junction J1 and J3. ठीक है, मतलब वहाँ पे avalanche breakdown हो सकता है junction J1 and J3 पे, which results to increase reverse current flow through SCR, जिसकी वजह से reverse current flow होगा SCR से. This reverse current causes more losses in SCR and even increase the heat of it. So there will be a considerable damage to the SCR when the reverse voltage applied more than the VBR. Okay. Next, advantages of silicon control rectifier, that is SCR. As compared with electromechanical or mechanical switch, SCR has no moving parts. Hence, with a high efficiency, it can deliver noiseless operation. मतलब क्या, इसमें SCR में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसमें नॉइसलेस ऑपरेशन होगा. मतलब कोई जो एरर है, नॉइस मतलब हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो एरर है वो नहीं हो पाएगा.
ठीक है. The switching speed is very high as it can perform 1 nano operations per second. ठीक है. There can be operated These can be operated at high voltage and current rating with a small gate current. मतलब हम इसे हाई वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग पर यूज़ कर सकते हैं स्मॉल गेट करंट के साथ. ठीक है. More suitable for AC operations because at every zero position of the AC cycle the SCR will automatically switch off. Okay. Small in size, hence easy to mount and trouble free सर्विस. उसका साइज़ छोटा है इसीलिए हम उसे कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ SCR. SCR कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस like rectification, regulation of power and inversion, etc. Like a diode, SCR is a unidirectional device that allows the current in one direction and opposes in another direction. Okay.